Hi guys, welcome to the channel once again. In today's video, I am going to discuss something really interesting with you, and that is about the analysis of marks that has been obtained by candidates selected as part of 2022 RBI Grade B batch. Through this video, you will get a lot of knowledge as in what has been the highest, lowest or average marks in different areas, objective, descriptive, and have people been scoring kind of good marks in almost all the areas, or people are scoring less in some areas and more in some areas to compensate for the same. So we will discuss on these lines in this video. It is going to be really an eye-opener for you. And before that, I want to show you something really interesting. If I have been at your place, obviously I would have some standard queries. What does RBI do? What are different departments in RBI? What is the promotion hierarchy in RBI? And regarding the exam, I would have queries. What is the pattern? What is the syllabus? What are different subjects asked in the exam? Is there a negative marking? What are the good sources? What are the cutoffs? What is the salary? All these queries as an aspirant, now I would be more than, I would say, eager to know about them. But many a times I've seen students wasting a lot of time on internet and YouTube finding answers to these queries, but then also they are not getting definite answers. But through this comprehensive guide which we have brought to you after a great amount of research, you can get answered all your queries in a very definitive manner and through a single source, that is this guide. Very colorful, just 30 to 35 pages. Read through this. A serious aspirant must read through this. कभी demotivate भी हो जाए तो इसको पढ़ लो. You will get that dose of motivation. तो ये मिलेगी कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाके you can download this for free. You need to pay nothing. This is free and this is a lot of value add to your preparation. Now we will analyze the marks of candidates who have cleared RBI Grade B 2022 exam. First, I want to discuss about the range of marks. So we know the cutoff this year for unreserved category was somewhere around 230 plus 232 if I remember correctly. So if you see the marks range greater than 260, there were only 5 candidates. Between 250 to 260 there were 21 candidates, and this is the peak competition area, guys. Between 240 to 250 and 230 to 250 there has been almost like 110 candidates. Almost 50% of the candidates, right, total number of selected candidates were 236. Almost 50% lie in this area. Then between 220 and 230, 39 candidates, and less than 229, 61. So these are basically below 230. The cutoffs were for the reserve categories. Overall, if I see this mark range, the competition at the top is very less. I mean, those who are getting higher marks, they're definitely getting selected. But if you see this range, almost 110 candidates in a range of 20 marks, which means for every mark there are around 6 to 7 people. So there is a huge amount of competition near to the cutoffs, I would say. And therefore, either you plan or prepare so much that you are in the top category, you are not worried. But if you are in this range, 10-15 marks near about the cutoffs, every single mark would matter. You cannot be lethargic saying मैं ये छोड़ देता हूँ, देखी जाएगी एग्जाम में ये छोड़ दूंगा. नहीं, you cannot have that attitude. To an extent, obviously you would leave things, but ultimately you need to realize that even a 0.25 can take your rank to a 10 plus is lower, and ultimately sometimes that can cost you your seat. So this is about the marks range and the number of candidates. Now let us see the marks of toppers. First of all, the overall topper, All India 1 rank. So the marks he is scoring, the total is 265.25. You can watch his video on our YouTube channel also. He prepared by himself for this exam. And then ESI objective, he got 28, descriptive 34, descriptive English 67, FM objective 30.25 and FM descriptive 36. The total written marks, that is in 3 papers, he has got 195 out of 300, and in interview he got 70. And it makes him the overall topper with a score of 265.25. Now here I have made a very interesting observation. If you see, these are the highest marks in these areas. He has scored 28, the highest marks are 32. He has scored 34, the highest marks are 39. He has scored 67 here, the highest marks are 76. In FM, objective 30, though the highest marks are 42,
FM descriptive 36. So the highest marks are 44. Now if you see the highest marks in each of these areas, ESI objective, descriptive, FM objective, descriptive or English, is kind of lot higher than what he has scored. But I think it is the consistency of this candidate which had made him the topper. You just see the consistency. He has underperformed nowhere or he has overperformed nowhere, but if you see the consistency in ESI objective, descriptive, English, FM objective, descriptive, he has shown a great consistency. Nowhere you can see that he has scored really good marks, or nowhere you will see that he has scored really less marks. So it is the consistency which makes him All India rank 1, though I would repeat that he has not scored the highest marks in any of the areas. So this is the All India 1 mark, All India rank 1 marks. And then if you see the marks obtained by the person who is the topper in the written part, right? So till phase 2, if we consider the marks, that is, we exclude the interview marks, then this person is a topper who has scored 205.25. So this is the highest in the written exam if we exclude the interview, and this person has scored 22.25 in ESI objective and 33 in descriptive, 73 in English and 35 and 42 in FM objective and descriptive. Now here again, this person has not underperformed anywhere or overperformed anywhere, but one thing is clearly to be seen here is that he has got very less marks in the interview, but still he has cleared the overall cutoff of 232. So for all those who are really worried about the interviews, guys, this is the technique. You score so good marks in the phase 2 that in interview, even if you get average, even if this person would have got 30 years, still this person would have got selected. So interview से डर लगता है तो phase 2 फोड़ो भाई. phase 2 में आपको इतने marks लाने हैं that you almost negate the participation of interview. That is the perfect example in front of you. अगर ये बंदा इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले आता तो शायद ओवरऑल टॉपर भी बन जाता, बट एनीवेज डजंट मैटर नाउ, राइट. सो ये दो टेक अवेज हैं. कंसिस्टेंसी मैटर्स. It can actually take you to the top, and I have seen every year toppers are actually those who perform consistently in all the areas. और अगर इंटरव्यू से डर लग रहा है तो अपना रिटन एग्जाम फोड़ दो, दैट इज योर बेस्ट चांस टू क्लियर द एग्जाम. बाकी इफ आई टॉक अबाउट हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इन दीज एरियाज, हाईएस्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड पे भी दिखाए थे, बट स्टिल सिंस वी आर कंपेयरिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो ये आपके ESI ऑब्जेक्टिव में 32.5 हाईएस्ट है एंड लोएस्ट इज 2.25. Now many people were saying कि ESI objective बहुत tough था. No doubt it was tough, but then there are people who are scoring around about 33 marks even in spite of that being tough. So I think it's all about filtering the right content and reading and retaining it. You can score good even in a tough paper. But anyways, कुछ लोग अलग ही level पे होते हैं, वो उन्होंने ये marks score किए हैं. Generally you will see the marks scored in ESI objective are really less by all the selected candidates. ESI descriptive में highest is 39 and the lowest is 17. FM objective always scoring 42.75, almost 43, and यहाँ पे 13.5 lowest है. पता नहीं ये क्यों आया, I don't see any reason. थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, मतलब यहाँ पे FM objective इतना भी टफ नहीं था कि lowest marks 13.5 जाने चाहिए, but anyways. FM descriptive 44 here highest and 20 is the lowest, and descriptive English 76 is the highest. Last year it was 79, this year it is 76, and lowest marks is 38.5. Interview में highest is 74 out of 75, highest is 74 and lowest is 15. So overall, if I try to deduce some learnings out of here, is first is, guys, you will clearly see that the variation in the objective part is lot more. ESI objective में देख लीजिए, highest is 32, lowest is 2, huge variation. Here also highest is 42, लोएस्ट इज 13.5. मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इन डिस्क्रिप्टिव जर्नली आप देखेंगे कि एफएम में 20 मार्क्स तो लोएस्ट हैं, लोएस्ट. ESI में भी 17 मार्क्स तो लोएस्ट हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव दे आर जस्ट 2.25. मतलब डिस्क्रिप्टिव में यूर ऑलमोस्ट गारंटीड के यार 50 में से 20 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे. आई मीन आप ठीक ठाक सा भी लिख के आएंगे, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ द लोएस्ट मार्क्स. ऑब्जेक्टिव में ज्यादा चांसेस हैं कि आपके कम मार्क्स रह जाएं इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, बट एनीवेज बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आर इंपॉर्टेंट.
बट स्टिल डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़नी नहीं है, बट ओवरडू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज even with a decent preparation you will get into no that mark range of 35 to 40 which is good enough. बट ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. अनदर एरिया वेयर नो वेरिएशन इज रियली ह्यूज इज इंटरव्यू 74 and 15. I normally tell people interview is just like your fourth paper यार, and here the variation is large. 74 जिसको मिल रहे हैं और जिसको 15 मिल रहे हैं, you see the difference of 60 is just being created here. सो इंटरव्यू को भी हमने सीरियसली लेना है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं. एंड इस लिस्ट को देखकर मेरे दिमाग में इतना जरूर आ रहा है कि भैया जिसके 2.5 नंबर हैं, 2.25 नंबर हैं, 2.25 इन ESI ऑब्जेक्टिव, बहुत लोगों के 5, 6, 7 नंबर भी हैं, स्टिल दीज पीपल हैव बीन एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. हाउ ऐसा उन्होंने क्या किया? तो मैं इस 2.25 का आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, हाउ दिस पर्सन क्लियर दिस एग्जाम इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग 2.25 इन ESI. सो ये इनके मार्क्स हैं. ESI ऑब्जेक्टिव में दिस पर्सन हैज गॉट 2.25, बट इन ESI डिस्क्रिप्टिव थोड़े ठीक ले लिए 29, स्टिल नॉट गुड. बट भाई इसने जो फोड़ा है इंग्लिश में 70 मार्क्स, और यहां पे भी आप देखेंगे इन द हायर 70s, और इंटरव्यू में भी 63. तो these two areas na, interview and descriptive English, we generally ignore, but this can be a savior to you, especially if you are not good at current affairs. इसको neglect मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए. और इससे एक चीज और निकल के आ रही है कि अगर आपका एक एरिया वीक भी है, doesn't matter, if you can work upon your strengths. This person had a really bad current affairs, I can tell you, just 2.25 in ESI, and overall in ESI this person was not good, but English में फोड़ा, FM तो बिल्कुल ही फोड़ दिया भाई. 75 के अराउंड मार्क्स हैं. आई मीन इफ यू सी द मार्क्स इन ESI 31, मार्क्स इन FM 75, ही हैज जस्ट एम्पावर्ड हिज सिलेक्शन थ्रू FM. और इंटरव्यू में बहुत डिसेंट किया, एंड ही क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ, गॉट 237.75. तो ठीक है, वी शुड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन ऑल द एरियाज, बट अगर एक एरिया वीक है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको अपने स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश मत कीजिए. रेदर वट एवर इज योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन दैट एंड कंपनसेट योर वीकनेस थ्रू दैट. ठीक है, एक लेवल तक ही आप अपनी वीकनेस को अपस्केल कर सकते हैं, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ ही उसको कंपनसेट करेगी. एंड दीज आर द काइंड ऑफ एवरेज मार्क्स गाइस. अगर मैं कंबाइंड लूं ESI ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, ESI में 50 हैं, लास्ट ईयर इट यूज्ड टू बी 55 to 60, बट इस बार पेपर और टफ आया तो और एवरेज मार्क्स गिर गए. FM में हम रियल थोड़ा सरप्राइज हूं, दो हाईएस्ट मार्क्स combined is 81, which is good enough. People get this amount of marks in FM, but average is bar, earlier it used to be 70, 72, this time it is 65, but I think ESI से अभी भी वो 15-20 marks का difference है, which is every year FM is really scoring. We tell people again and again to start with FM. ESI के थ्रू सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, but FM के थ्रू, in spite of having ESI as a weakness, is really something I have seen people doing it. और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एवरेज स्कोर 61 है, सो आई थिंक मार्किंग हैज़ बीन डिसेंट. कोई एवरेज मार्क्स से ये नहीं लग रहा है कि मार्किंग स्ट्रिक्ट हुई है, तो एवरेज मार्क्स बहुत सही दिए हैं. एक चीज़ जो मैंने देखी है, अगेन टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दिस ईयर ऑल्सो जिनके जैसे सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स हैं एंड डिस्क्रिप्टिव में उनके होंगे 27, 28, 25, या फिर डिस्क्रिप्टिव में उनके 40 हैं, ऑब्जेक्टिव में होंगे 25. So I've seen lot of students where I can see the variation between the objective section of the same paper and the descriptive section of the same paper is huge. So again that can only be explained कि यार अगर आपका एक सेक्शन वीक भी है, डिस्क्रिप्टिव में आपको डर लग रहा है, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव को इतना फाड़ू बना लो कि डिस्क्रिप्टिव में अगर 5-7 नंबर कम भी आ गए, यू आर स्टिल एबल टू गेट दैट एवरेज स्कोर. तो पॉइंट वही है, अगर मैं सम अप करूं, सो व्हाट आई कैन सी इज के जो लोग बहुत ऊपर हैं, देयर फोर्टे इज कंसिस्टेंसी. दे नाइदर हैव एनी स्ट्रॉन्ग एरिया, सुपर स्ट्रॉन्ग एरिया, बट दे विल नेवर हैव अ वीक एरिया ऑल्सो. आप टॉप 20 को देख लो, कंसिस्टेंसी इज व्हाट इज द की पैरामीटर देयर. बट हैविंग सेड दैट, consistency is not the only thing that will take you there. Play on your strengths. Play on your strengths. I'm not saying ignore your weaknesses. Play on your strengths to compensate your weaknesses to a level. Weaknesses पे काम करना है, but
वीकनेसेस से डरना नहीं है कि इसकी वजह से मेरा नहीं होगा। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, सर मेरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं है, मैं तो क्लियर कैसे करूंगा? कर लोगे भाई। डिस्क्रिप्टिव में 20 नंबर तो गारंटेड हैं, आ ही जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करो, 30 के करीब ले आओ, बट देन जो आपका 5-7 मार्क्स का यहाँ लॉस हो रहा है उसको ऑब्जेक्टिव में करो। So consistency will obviously take you to the top in say top 20, but playing on your strengths can still help you secure a rank. Always remember that. So do not be demotivated. मेरे करंट अफेयर्स अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, अपना डिस्क्रिप्टिव अच्छा बना लो। डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, अपना ऑब्जेक्टिव अच्छा बना लो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अच्छी कर लो, इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। समहाउ यू हैव टू फाइंड अ वे टू रीच दैट मैजिक फिगर। उसके बहुत रास्ते हैं, सिर्फ एक रास्ता नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं वो भी एक ब्लेसिंग है। वी शुड काउंट ऑन दैट एंड मेक इट नो वर्क इन आवर फेवर। सो विद दिस आई टेक योर लीव गाइज, एंड आई ओनली वांट टू से कि आपको बस फोड़ना है यार, फोड़ना है, और कोई चीज़ आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। एंड डू लेट मी नो बाई कमेंटिंग बिलो दिस वीडियो कि सर मैं फोड़ूंगा, इन स्पाइट ऑफ माई वीकनेसेस मैं फोड़ूंगा थ्रू माई स्ट्रेंथ्स। यू हैव टू टाइप इन स्पाइट ऑफ माई वीकनेसेस मैं फोड़ूंगा थ्रू माई स्ट्रेंथ्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।